सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, क्या हो रहा है भाइयों बहनों जानवरों। यार मानस, ये क्या, इसका क्या मतलब है, क्या सीन है, क्या इसका क्या लिखा हुआ, मुझे तो आई डोंट नो हाउ टू रीड हिंदी। इज हिंदी राइट? Yeah, that's Hindi. तो Yeah. क्या लिखा हुआ है? Think Nike. सोच मत बस कर दे। सोच सोच मत बस कर दे। Don't think, just do it. डोंट थिंक, जस्ट डू इट। क्या बात है, वैसे 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 क्या बात है। अच्छा, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस। यार सब लोगों ने सोचा होगा कि क्या, कहाँ गए यार, where have they gone? Brown Monday teasers last season, just a few teasers near the end of the season. Nothing throughout the summer, nothing throughout the transfer window. नहीं, एक एपिसोड किया तो था. हाँ चलो, एक another teaser basically, another teaser. लेकिन आई एम कन्विंस्ड वी आर बैक। और सब लोग घरों में बैठे होंगे, नहीं वो आएंगे, वो जरूर आएंगे, नहीं वो आएंगे। टेलिंग ईच अदर यू वाज राइट, हम आएंगे, हम आ गए। दक्ष इज हियर, मानस इज हियर, निधि इज हियर। लेट्स आस्क देम वन बाय वन। दक्ष कैसा है तू? ऑल गुड यार, ग्रिस भाई मजे कर रहे हैं. फुटबॉल शुरू हो गया, सो हैप्पी अबाउट इट यार. एंड बस सब हेल्थ बढ़िया है. मेन थिंग, मस्त माहौल है, सब बढ़िया यार. ऑल ऑफ दिस यार, सब बहुत मस्त है. एंड ऑफ कोर्स always happy to be in the company of these fine gentlemen, Manas, Nidhi, and you of course. ओहो And welcome back to Brown Monday यार. बेशक बेशक, व्हाट अ ग्रेट स्ट्रीम। अभी शुरू भी नहीं हुई, उसने न्यूटन ने बोल दिया व्हाट अ ग्रेट स्ट्रीम। यू आर द ये मेरा भाई, यू आर रियल आर्टिके। इट्स नॉट लेट इफ यू आर ब्राउन। नहीं, हम फिक्स बिल्कुल. करेंगे, फिक्स करेंगे। अच्छा, Ramiz is in the building. Ramiz Saab, Salam, Grizz, hello. Ramiz Saab is one of the guys that has been telling me my Urdu, but we will discuss that. हाँ Manas, जी. कैसा है तू? बढ़िया। देखो, ब्राउन मुंडे का एंडो तो हो ही नहीं सकता है, ब्राउन मुंडे परपेचुअल रहेगा। देखो, pun is gonna fly. The puns are gonna fly. I'm sorry. The end of puns won't stop. एंडो से बोलता है शुभम। एग्जैक्टली, तो ब्राउन मुंडे का एंडो कैसे हो सकता है? मतलब अभी तो शुरुआत है। वेरी वेरी सायोनारा एवरीवन। कोनिचिवा शुभम, कोनिचिवा। ये बोल रहा था। अभी से सायोनारा क्यों चला गया? अभी तो यार कोनिचिवा होना चाहिए ना. कोनिचिवा एवरीवन। ये क्या सीन है यार? This means goodbye. यार आई लव शुभम कोशिश कर रहा है बट मेजरली हक दिया उसने। Major flop. Major flop. बट ग्रिस भाई वेरी हैप्पी यार। मजा आएगा। न्यू सीजन शुरुआत करते हैं इंशाल्लाह। निधि तू कैसा है मेरा भाई? मोशी मोशी मोशी। यार तुम सब लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है यार। आई एम सो बिहाइंड। नहीं ये स्पॉन्टेनियस है। मैं तो अभी 4 बार टोक्यो ड्रिफ्ट सुन के आया हूँ। I'm so behind man. What is this man? Oh यार, सादिक भाई जल्दी आओ। सादिक, हम यही कह रहे हैं सादिक भाई जल्दी आओ, लेकिन सादिक भाई unfortunately won't be joining us today. I think he's busy. कोनिचिवा ओगिन कहते चुका। अच्छा, ये अभी मिला तो। ये I've been brushing up on my Japanese. I have to assume कि तू सही बोल रहा है, गाली नहीं दे रहा। सही है। जिसके लिए जापानी सीख रहे निधि भाई, वो उसके लिए डेफिनेटली सही बोल रहे हैं. निधि भाई has anyway, let it be. यार इसीलिए बोल रहा ना। नहीं, I assure you, I assure you, मैंने अभी just पूछा hello how are you. I assure you. ठीक है, we might have some Japanese people in the chat, and if you are swearing and abusing at me, then I'm going to block you on all bloody platforms. We have a new member. Thank you very much. Hey Nishchit bhai, how are you? How do you say this? You are blessed, Gris bhai. Nishchit is one of those bandas जो अगर आपको प्यार करेगा ना, तो आपको ऐसा प्यार करेगा कि overwhelming हो जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ। Thank you very much. I'm humbled. Thank you very much. You learn something new every day. In fact, before we get into the football chat, I want to learn something else. यार तू क्या जवाब देता है WhatsApp में? मानस, ये क्या ची? What is this? I love how everybody, हम तीनों और चैट सबको समझ में आया, बस आपको समझ नहीं आया। बदला लूंगा, don't worry, बदला लूंगा।
पर नहीं ये नहीं क्या नहीं है? नहीं, बदला नहीं है, बदले बदला की नहीं बात है। नहीं है। एक बंदा है, कंटेंट क्रिएट करता है, रिजन फ्रॉम द एशेस बोलते हैं ना, लाइक वो कुछ नहीं था, अभी वो हाउस होल्ड नेम सब बन कुछ गया है, है, और सब उसका कुछ है। एक डायलॉग था सो आपको हम बाय द एंड ऑफ द सीजन आप उसके भक्त हो जाओगे, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। हाँ, आप एक if पीछे you know Yeah, us, this जैसे is you it. will This know is it. Khanage. Everybody knows now. Everybody knows. Everybody देखा हाँ, everybody बेसिकली knows Yeah. about आप नॉर्थ कोरिया में जाते हो तो जैसे किम जोंग उन की फोटो होती है ना, आपके घर में भी पुनीत सुपरस्टार की फोटो So is होगी, this मैं लिख like के देता Karwa do Chia? This one, yeah? it. हाँ हूँ। हाँ, Karwa do Chia. Nidhi bhai does it best. Nidhi bhai does it best. निधि कर दे एक बार। You have to go like यार ये क्या उसका क्या who is he? What is he? Just we'll Puneet क्रिस we'll भाई bhai, आराम से, आई थिंक इट्स अ it's वीडियो कॉल नॉट लाइव, no, वो and आपको हम करवा देंगे, yeah, लाइक ट्रस्ट मी। Grace bhai, Lord Puneet is like, matlab, how do I explain it to you? It's like a way of life. You'll know after some time. Matlab, Yeah. it can't be explained like in 10 minutes. Okay, what is Lord Puneet? चलो मैं कोशिश करूंगा. I'm gonna do my research. But yeah. I'm but gonna look it but up. But क्या? now that you've mentioned it, Hmm. you will know about Lord Puneet. Hmm. Don't worry. अच्छा ठीक है. मैं इसको गाली देने वाला था यार. Every time I send a message, Chia. I'm saying, what's he saying to सॉरी me? यार क्रिस भाई, आप ब्राउन हो, मैं अज्यूम कर लिया आपको पता होगा वो। No, it's cool. It's cool. I like to learn new things every day. So ये भी सीखो. अच्छा, listen. I've got a lot अरे of निश्चित ने complaints. मेंबरशिप गिफ्ट करी है क्या? क्या I हुआ? think so. I think so. I I don't know. think so. निश्चित डज दैट, निश्चित करिए, कम्स ऑन लाइव स्ट्रीम्स StreamYard एंड ही में गिव्स मेंबरशिप, हाँ, आपके वो चैनल पे भी नए Oprah मेंबर्स। Winfrey है. हाँ, He's the he Oprah is the Winfrey of. Indian Oprah Winfrey भाई. यार बहुत thank you. Claim इसका मतलब ये होता है claim, हाँ? People are claiming the gift. People are Yeah, trying yeah, to claim, but उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता guys. He's gifted 10 memberships. He's gifted 10 memberships. Thank you Yeah. so much निश्चित यार for Yeah, gifting 10 Nishit, memberships. thank you very much. Now I have to recognize Nishit, man, all the time. Make sure you guys नहीं remember नहीं निश्चित Nishit. Nishchit. Sorry, Nishchit. निश्चित. Yeah. Nishit. Can I call him Nish? Yeah, you can call him Nish of course. निशी उसी भाई? से पूछ लो वैसे तो, but हाँ. हम Yeah. लोग ही डिसाइड कर ले. हाँ ठीक है. हाँ ठीक है, चलो जाओ आपस में डिसाइड कर. एकदम बराबर है. सही है ना, ऐसे ही होता है. Guys, listen. By the way, I have to stop. I either have to speak my normal English or have to speak proper Urdu ya Punjabi, because people have been complaining about me, serious complaints. Since we done Brown Monday, we haven't had no complaints. We've had only lovely, beautiful words of support. Like recently, I've noticed people are complaining about Grizz. They're saying, why does he put an accent on for this show? It's disrespectful. Oh, yaar, me and disrespectful? Yaar, you couldn't think of a nicer bloke. I'm saying it myself. Which accent? Which accent is disrespectful? यार वो कहते हैं जो ना हम अब do the when you are not native English accent वाला, समझ गया ना, that one. हाँ हाँ Oh, समझ गया. okay. So they're saying either do full English, speak your normal language, or speak your mother tongue. And I was thinking maybe they have a point. My intention is never to offend, first and foremost. Never. It's just I'd like to get into the groove and make everyone feel comfortable. But if it makes some people uncomfortable, I'm sorry. So now I'm going to go back to speaking English, or I'm going to speak my language. And my language, I don't think these guys are going to understand. That's the problem. But this is the challenge. And this is the twist. So I'm going to speak Urdu. करिए ना, करिए, नहीं समझ आएगी तो हम पूछ लेंगे. पूछ लेंगे ना. अब तो आएगा मजा. तभी मजा आएगा. पूरा सी मजा. हाँ. Yeah. So people are saying, so a lot of people have been saying, bro, you don't speak Urdu. We've met you. We used to go school with you. We used to go college with you. You speak Punjabi. You speak Mirpuri. You speak Patwari. Speak that. I said, okay, I'll try. But these guys might just get off the stream when I start speaking like this. So here we go. Here we go. Try karte hain, yeah? Try करो भाई, try कर. चलो Fabrizio, go for it. Everyone speak their native tongue, man. Maza aega. You know what I mean? This is Maza what it's about. Guys, smash the like if you haven't. Subscribe if you haven't. Follow the guys if you haven't. How dare you haven't followed Menace and the Monk? How dare you haven't followed A for Arsenal Ducks?
How dare you guys? Yeah, Ramiz, I'm gonna drop some patwari anytime, any place, any network. देखते हैं. लेकिन guys, season is upon us. Where do we start? कुथा शुरू करिए, कुथा शुरू करिए. आप बताइए. ये तो बहुत easily समझ आया. इतनियां बढ़िया टीमां, इतनियां बढ़िया ट्रांसफरां, कुथा शुरू करिए. I think A is for Arsenal and A is the first letter. तो ऊपर से शुरू करते हैं, not ऊपर of the table, but ऊपर of the alphabet. Don't get carried away. You're not Daksh, confident, new season, new start, good start, first game of the season, then a couple of crushing blows. Oye, Timber ना सुना, बड़ा पैड़ा हो यार Timber नाल यार. नहीं, बुरा तो यार बहुत हुआ है टिम्बर के साथ, बट ACL तो हर जगह ही चल रही है. टिम्बर को ACL हो गई, मिंग्स को ACL हो गई, मिलिटाओ, कुर्तवा, सो मेनी. एंड आपको दिख ही रहा है, वरान हैज बीन कंप्लेनिंग कि यार स्केड्यूल इतना भारी है, ऐसे तो नहीं हम कर सकते. बट दैट्स द थिंग यार, यू हैव टू लिसन टू द प्लेयर्स कि इतना ज़्यादा फुटबॉल हो रहा है. अब तो ये नया रूल भी आया, एडेड टाइम वाला, where you're seeing 10-11 minutes being added on after every game. तो यार इंजरी इज ऑफ कोर्स अ क्रशिंग ब्लो, बट हमने इसी के लिए ही रिक्रूटमेंट ऐसे करी थी कि आप सिर्फ ऐसा बंदा ना लो जो एक पोजीशन में बहुत बढ़िया खेलता है. ही कैन डू मल्टीपल थिंग्स. तो आपका जैसे राइट बैक पे टॉमियासू खेलेगा, पार्टे को हमने ट्राई कर लिया, बेन वाइट तो है ही है. सेम थिंग विद लेफ्ट बैक, जिनचेंको, टियर्नी, टॉमियासू, किवियोर. तो ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह के लिए एक ही टूल रखा हुआ सॉर्ट ऑफ, बट आपके पास अब इतनी वर्सेटिलिटी है कि आप मल्टीपल प्लेयर्स को मल्टीपल जगहों पे खिला सकते हो. सो आई विल से कि ऑफ कोर्स ब्लो है, बिकॉज हम अपना बेस्ट फुटबॉल खेल रहे थे. टिम्बर वाज वेरी इंकरेजिंग. हमने चाहे राइस साइन कर लिया हो, हैवर्ट साइन कर लिया हो, बट जो सबसे स्मूथ ट्रांजिशन था ना प्लेयर का फ्रॉम अनदर टीम टू आर्सेनल, आई वुड हैव सेड कि यार टिम्बर का ही है. एंड देखो, सिल्वर लाइनिंग वाली बात है कि उसका ACL टेयर है, बट मेनिस्कस पे कुछ नहीं है. तो उसका ले ऑफ आई थिंक 6 to 8 months का है. अगर मेनिस्कस पे टेयर होता तो फिर 12 से 13 महीने जाता वो. भाई वो मतलब पूरा सीजन बाहर है दक्ष वो. या वो तो वो अब सिर्फ चैंपियंस लीग फाइनल में ही आएगा. यार बुलाया क्या? उसको बुलाया क्या? उसको बुलाया क्या बोलता है. Akshay thinks he's tuned into physio room and he's asking us to explain what ACL is. यार गूगल कर डॉक्टर को पूछ, ਅਸੀਂ डॉक्टर लगने आए थे बैठे. ACL क्या है बाबा? But I don't know. Maybe Daksh सिंपल भाषा में it is that tendon जो आपके फ्रंट ऑफ द नी के जॉइंट्स को कवर करती है. I found this for Hey Sierra Baba, but I don't know. ये किसका है? It's not a problem. यार ये मेरा तो नहीं है भाई. मेरा भी नहीं. अच्छा, he automatically started answering. ACL is एक्सेंट से समझ आ गया, हमारा तो है ही नहीं. हमारा तो नहीं. But yes. Look, ACL stands for anterior cruciate ligament. हाँ, तो जैसे हर लिगामेंट होती है, बोन टू बोन कनेक्ट करती है, आई थिंक. तो यार वही है, वो लिगामेंट रप्चर हो गया. तो बस यही इशू है यार. इट्स द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ अ फुटबॉलर, क्योंकि एक्सप्लोसिवनेस से लेके वेट लोड सब उसी पे ही पड़ता है. तो बस कोई बात नहीं है, 6 से 9 महीने, होपफुली वी कोप विद इट. वैसे तो लुक्स लाइक हम अभी भी मार्केट में हैं टू गेट समबडी इन, बिकॉज we will have to still get a defender apparently. Why? What's this notion? Every time there's an injury, every time something, buy more players. What's happened to coaching? Why is every answer हर इंजरी का जवाब या सवाल buy players? एक गल हुई. I think ग्रेस भाई, आपको वो भी देखना पड़ेगा ना कि अब बहुत पैसा खर्च हो गया. नहीं, अब बहुत पैसा खर्च हो गया है. अब हम उस टेरिटरी में नहीं है कि यार चलो इंजरी हो गई, प्लेयर धस गया, अब हमारे पास ये, हम इसको एक्सक्यूज यूज कर लेते कि आप चौथे फिनिश करें, 5th फिनिश करें तो ठीक है. अब मेरे हिसाब से उस स्टेज पे है कि क्लब इस लेवल पे पहुंच गया, उसने डिसाइड कर लिया कि देखो, वी विल पुल आउट ऑल द स्टॉप्स नाउ टू गो फॉर द डिस्टेंस. एंड इसके लिए अगर आपके सक्सेसफुल सीजन के बीच में सिर्फ 20 या 25 मिलियन की एक स्टॉप गैप साइनिंग का डिफरेंस है, तो आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते. मेरे को लगता है क्लब में इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर हम एक स्टॉप गैप साइनिंग कर लें, जब तक टिम्बर की एब्सेंस के साथ कोप ना करें,
तो आई थिंक दे विल मेक दैट गैम्बल, बट ये कोई सुपरस्टार टाइप्स नहीं होने वाला. इट विल बी समबडी जो अनवांटेड है. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे सिटी का लपोर्ट है, ही इज अनवांटेड. आप उस टाइप के प्लेयर को जाओगे, या फिर ही इज अ वेरी यंग प्लेयर जिसको आप ले नहीं सकते, या फिर मतलब जिसको डेवलप करना है आपके और पास ज्यादा time टोमियासु है, टियरनी है जो खेल सकते हैं उधर. 2 प्लेयर तो है ही ना. बताओ क्या है. देखो इट इज एज अ बॉडी तो है, बट एज द स्टाइल है, इट्स जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स, वो स्टाइल फिट नहीं करेगा. जैसे दैट्स इज लाइक सेइंग कि राइट विंग क्यों चाहिए, बिकॉज बेंडोक तो है, बट बेंडोक स्टाइलिस्टिकली विल नॉट फिट व्हाट लिवरपूल डज, राइट? एंड इट इज द सेम थिंग विद द रीजन यू नीड अ मिडफील्ड इज, लेट्स से हार्वी एलियट या कर्टिस जोन्स फिट नहीं करे. दे आर बॉडीज, बट दे आर नॉट द एग्जैक्ट प्लेयर्स दैट क्लॉप नीड्स टू एलिवेट द गेम टू दैट नेक्स्ट लेवल. तो आपको फिर यू ट्राइड फॉर अलाविया, अब आपको एंडो लेना पड़ा. तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट फॉर अस अबाउट बॉडीज कि आपको बस जगहें भरनी है. अब आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो स्टाइलिस्टिकली भी फिट करके आपका गेम ना करें. राया लेने की जरूरत नहीं थी. गोलकीपर वाज वन ऑफ द लास्ट प्लेसेस जिसको हमें रीइंफोर्स करने की जरूरत थी. बट डिफरेंस ये होता था कि अगर जैसे जितने एसीएल्स हो रहे हैं, अगर रैम्सडेल को हो जाता और हमें टर्नर को खिलाना पड़ता, और टर्नर अच्छा कीपर है, स्टाइलिस्टिकली हमारा गेम बहुत बदल जाता है. आपकी लाइन जितनी हाई होती है उसको थोड़ा पीछे आना पड़ता है, आपको गेम बदलना पड़ जाता है. देन इट्स नो पॉइंट. तो मेरे हिसाब से राया भी हमने इसीलिए लिया है, बिकॉज सिर्फ बॉडी नहीं भरनी है आपको, आपको अपना स्टाइल मेंटेन करना है, ताकि अगर इंजरी हो या प्लेयर थक जाए तो आपकी गेम प्लान में कुछ ज्यादा डिफरेंस ना आए. दक्ष, एक सवाल करना सी. हाँ जी, हाँ जी, राया तो आ गया. हाँ जी. Ramsdale performed very well last season. हाँ, वेरी Like, एडमिरेबल. a lot of neutrals rate him. या लेकिन हूं के बनसी. Raya, surely he's not come to be number 2 for the rest of his career. क्या प्लान है? यार प्लान तो ये है कि आप 2 क्वालिटी प्लेयर्स लाओ हर पोजीशन के लिए. Not in goalkeeping though. अनयूजुअल है, But but very unusual. Does anybody know any other team that has been successful? Arsenal has with done this. It's not successful, but it is something जो हम करते हैं. successful जब नहीं, हाँ. चेक और लेनो के बीच हमने किया था, लेनो केम आउट ऑन टॉप. लेनो एंड एमी मार्टिनेज हमने किया था, लेनो केम आउट ऑन टॉप. फिर लेनो एंड रैम्सडेल किया, रैम्सडेल केम आउट ऑन टॉप. एंड देन अब हम रैम्सडेल एंड राया के बीच करें. इट इज समथिंग, हम इवेंचुअली ना 2 स्टर्डी कीपर्स रखते ही हैं, और उनमें से एक को वी एंड अप सेलिंग इन द नेक्स्ट 18 मंथ्स और व्हाटएवर. तो आई थिंक प्लान यही रहेगा. नेट पॉजिटिव यही है कि देखो इन दोनों में से जो बेटर होगा वो रुक जाएगा. ईदर वन ऑफ देम विल इम्प्रूव, और दूसरे वाले को निकलना पड़ेगा. अच्छी बात यह है कि जो राया है, ही इज वेरी क्लोज विद आवर गोलकीपिंग कोच. राया हमारा रैम्सडेल से पहला टारगेट था, हम राया के लिए ही जा रहे थे, बट राया का नहीं हुआ उस टाइम मूव. दैट्स व्हाई वी वेंट टू रैम्सडेल. तो राया makes हैज sense. एक्चुअली बीन हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी. एंड एज विद एवरी क्लब यार, गोलकीपिंग कोच का इनपुट बड़ा ज्यादा होता है गोलकीपर कौन होना चाहिए. एंड हमारा जो गोलकीपिंग कोच है, ही इज आप बेस्ट फ्रेंड्स है राया के साथ, उस टाइप का है. सो Makes ये sense. उसकी रिकमेंडेशन है. Hip hop legend, thank you very much for the message and reminding us. Yaro, just wanted to give big shout out to both countries' independence. Both. Thank you, Yar. Nidhi, have we seen 2 goalkeepers compete like this at the highest level and be successful? I can't think. कोई समझ नहीं आ रही क्या plan है. It's either Ramsdale, because you can't play. Goalkeepers is one of those positions where you need rhythm, understanding with the back four, has to True. be continuity. In recent times, all successful teams, we can reel off the back four, maybe one extra player and the goalkeeper. Fixed, permanent. You could say Chelsea में Kepa और Mendy थे दोनों. सिटी भी है, Ortega Successful. and Who's successful? Not successful. This one I mean, but successful. competent तो हैं दोनों. यूसीएल नहीं जीते थे वो लोग वो सीजन. मेंडी केपा वाला. हाँ. Fluke ने. क्या ग्रेस भाई. नहीं, I but think- सिटी भी रखती है यार. सिटी भी एडिसन और ऑर्टेगा रखती है. नहीं, I think Arsenal long term plan है to make Raya the number 1. I think so. I personally think the long term plan is to make Raya the number 1 keeper and Ramsdale slowly phase him out या फिर replace him या जो भी. So I think नहीं, but वैसे तो याद नहीं आ रहा है. Not seen a lot of teams with 2 very good keepers. No, लेकिन बात मैं ये पूछ रहा था, सवाल ये कर रहा था
two goalkeepers that have been alternated and the club's been successful. Kelleher is a wonderful keeper, but it's Yeah. it's not on this level. Alisson is the clear number one. Kelleher is the clear number two. Ramsdale and Raya, I don't think is clear. Maybe इसमें it is. क्लैरिटी नहीं है. आई थिंक द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे आता है वो था रोमा में, जब एलिसन रोमा में था और शेस्नी था रोमा में. आई थिंक दैट वाज इट. उसके बाद भी एलिसन मूव कर गया था. ये लंबा टाइम नहीं चलता है ग्रिस भाई. द गुड थिंग हमारे लिए इज दो चीज़ें अच्छी हैं. नंबर वन, रैम्सडेल ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया 5 साल का. तो ऐसा तो नहीं है कि वो निकल जाएगा 1-2 साल में कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन करके, और हमें बेचने की उतनी ज़रूरत नहीं है. दूसरी चीज़, राया को हमने परमानेंट डील पे नहीं 3 मिलियन के लोन पे लिया है. सो इट्स लाइक अ ट्राई बिफोर यू बाय Very काइंड ऑफ, clever. है ना. और ऑप्शन है, ऑब्लिगेशन भी नहीं है. लोन डील. हाँ, 3 मिलियन लोन डील, एंड इफ यू वांट यू कैन हैव अ 27 मिलियन का बाय ऑप्शन. Very clever. तो अगर आपको मान लो लग रहा है कि यार देखो रैम्सडेल इज गुड इनफ, हमने उसको कंपटीशन दिया, ठीक है, ही विल बी द क्लियर नंबर 1, ठीक है. और उसने हाउ वी कन्विंस्ड राया कि वो ब्रेंटफोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी साइन कर ले. सो ब्रेंटफोर्ड भी खुश है ये लोन डील देने के लिए. सो आई थिंक इट्स लाइक अ विन विन फॉर एवरीवन ओवर हियर. मानस, कैसा नजर आया आर्सेनल? For I know only one game. Yeah. But we know pre-season they looked good. Signings तो हमने बात की है कि कितने अच्छे signings थे या कितने pressure पे हैं अभी after spending that much money. क्या ख्याल है? Early prediction. I know we didn't do predictions exactly, but just roughly क्या ख्याल है Arsenal? Looking good? Timber is a blow. मेरे को लग रहा है आर्सेनल सॉलिड रहेगा इस सीजन. श्योर टिम्बर का ऑब्वियसली इम्पैक्ट होगा, बट आपने डेक्कन राइस साइन किया, काय हैवर्ट्ज साइन किया है, नया गोलकीपर साइन किया. आई थिंक आर्सेनल इम्प्रूव करेगा लास्ट सीजन से. वेदर वो गुड इनफ है टू बीट मैनचेस्टर सिटी वो अलग बात है, बट एक आर्सेनल में जैसे वो राया जब आया तो वो आपने वो वीडियो देखा ना कि वो आर्टेटा और वो टीम कैसे ग्रीट कर रहे हैं. लाइक वो एक बॉन्ड मेरे को आर्सेनल में दिख रहा है जो मेरे को थोड़ा लिवरपूल इश लगा. लिवरपूल वाला बॉन्ड इश लगा कि मतलब कि वो एक फैमिली वाइब लग रहा है मेरे को आर्सेनल में. और मे बी ये साल इस एक साल टू अर्ली, बट मेरे को लग रहा है कि आर्सेनल करेक्ट ट्रेजेक्टरी में जा रहा है. टिम्बर होता तो शायद से डिफरेंस होता. मेरे को पता नहीं था कि वो पूरा सीजन मिस करने वाला है भाई. मेरे को जेन्युइनली पता नहीं था. बट आर्सेनल आर फाइन एंड they should be okay. I think they are the team. मैंने सीजन शुरू होने के पहले बोला था कि आर्सेनल है टीम जो सिटी को चैलेंज करेगा. I stick by that. मेरे हिसाब से आर्सेनल is the team जो सिटी को चैलेंज करेगा. निधि, you share those opinions? तू आर्सेनल का बहुत बड़ा फैन है. सेकंड टीम तेरी आर्सेनल है. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन I think Arsenal are still City's closest competition, but I have my eye out for Newcastle यार, क्रिस भाई. I know थोड़ा लोग बोलेंगे बहुत अर्ली है और नहीं हो पाएगा. For all you know नहीं हो पाएगा, but मेरे को मतलब I am not writing them off yet. Man United can surprise a few people, right? So I just feel कि hopefully it is not again a 2-horse race, because वो boring हो जाता है. Let's have more horses on the courses, but यार सिर्फ आर्सेनल नहीं है मेरे हिसाब से. there are more teams that can push City. मेरे हिसाब से namely Newcastle and Man United. अच्छा. H says read the super chats bro. Super chats जरूर पढ़ूंगा मेरा भाई, but if they are stupid and rude and disrespectful, I'm not going to read them. So think about what you wrote the first one, and then think about the next one. अच्छा, तो आर्सेनल तो ठीक है. मानस, क्या सीन है लिवरपूल में मैन? What's going on? How are you feeling? पैसा है भाई, पैसा है. पापा के पास पैसा है अभी. Now we know, bro. Now we know. Huh? How you say a million, man? In my language, shit. क्या बोल रहा? करोड़? मिलियन. करोड़ है, बहुत सारे करोड़ हैं. बहुत करोड़ है. हाँ, करोड़पति है हमारे ओनर. ये करोड़पति है अंकल जॉन. हाँ, बड़ा पैसा से.
भाई ख्वाबा पैसे की भी तो नहीं कोई कमी सियासा नहीं कि है, इतना पैसा उसके कोल, ओह माय गॉड। पैसे की लेकिन तो now कोई we कमी know, नहीं है अंकल के हैं? पास, पैसे की कोई कमी नहीं है अंकल के पास। पैसे की कोई कमी नहीं, क्या है वो, दिल की कमी है इसे? देखो ग्रिस भाई नियत, अभी क्या हो गया ना, नियत। नियत की कमी हो गई। नियत की कमी। ओ देखो हो। देखो देखो बात ये है ना ग्रिस भाई, हमने जब 110 मिलियन का जो बिड डाला ना, तो मैंने हम्म, दीदी को सुबह 3:30-4 बजे कॉल किया और मैंने बोला कि भाई आई एम सो सॉरी मैं तेरे को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट हम लोग ने 110 मिलियन का बिड डाल दिया है काइसेडो के लिए, ब्राइटन ने मान लिया। बात ये है कि हमें खुशी ये नहीं थी कि काइसेडो के लिए कर दिया है, हम्म। बट सरप्राइज फैक्टर ये था कि हमने 110 मिलियन डाला। ओए, 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 हाँ, ओए, ओए। वो अब नाउ अब केड़ा वो बैंक लुटिया, केड़ा बैंक लुटिया। वही मतलब ये कहाँ से, चलो ठीक है अभी, अब बात है ना ग्रिस भाई, हमने एंडो साइन किया है 1/9 बजट में, जो काइसेडो के लिए बिड किया है, ठीक है 19 मिलियन ना? Oh यार, वो 19 बात यूरो। बात करेंगे। Listen, don't let's not talk about the 90. Let's still talk about glorifying the 100 million. Carry on, carry on. नहीं Feels बट मेरा good. Feels नहीं बट good. मेरा पॉइंट है कि हमने तो अभी बाकी है 90 मिलियन, हाँ, है ना? सो अगर आप अभी किसी और को साइन नहीं करो तो फिर ये तो बड़े धोखा है, ये तो फिर आप 90 मिलियन ये कहाँ गए? fraud अब क्या है यार? ये फिर आप See, चैरिटी में तो बांट नहीं रहे हो आप, मतलब आप कोई कोई एनिमल शेल्टर में प्रोवाइड तो नहीं करोगे वो 90 मिलियन। आप मतलब पता है क्या होने वाला है, आप अपने बेसबॉल टीम में डाल दोगे, आइस हॉकी टीम में डाल दोगे, बॉस्टन के प्रोजेक्ट में डाल दोगे, तो अभी 90 मिलियन कहाँ जाएंगे? और अगर नहीं जाएंगे तो गए कहाँ, बताओ कोई। सो निधि अभी तू आप दस, करिए। निधि तू दस, किथे गए पैसे? पैसे किथे अभी नहीं? हम लोग बाबा के स्ट्रीम पे थे, तो मैंने बोला कि एक देयर वाज अ वेरी वायरल मीम वेयर अ कपल हैज गॉन टू अ रेस्टोरेंट, और जो लड़का होता है वो मील के बाद ऐसे पैसे निकाल के रखता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड मतलब उसका हाथ ऐसे पकड़ लेती है, नहीं नहीं यू डोंट नीड टू पे, एंड अपने अपने पर्स से निकाल के पैसे रख देती है। व्हाट शी आल्सो डज इज टेक्स हिज मनी एंड कीप्स इट इन हर वॉलेट। सो ठीक है, ये एफएसजी ने किया है, ये नहीं इन्होंने यार, हमको ये हमने दिखाया हमको 110 मिलियन। नहीं यार। खर्च खर्चना तो है नहीं, Oh राइट? no, fraud. Oh no. Oh no. दिखा नहीं यार, दिया, do ये we believe देखो। that? नहीं, like seriously, do देखो we मतलब believe that? हाँ, ये टीज किया है हमें, ओके फिलहाल अगर ये पैसा ये लोग ने ना नहीं, हुआ ना spend, तो then. फिर तो आउटरीच जस्टिफाइड है ग्रिस भाई आपका। बिल- मैंने वो 2 मिनट का स्पीच देखा एंड मैं हंसा, मैंने रिलेट किया, मैं सब कुछ किया कि If यू नो football is a humbler, FSG is a इज द crumbler. क्रम्बलर। हाँ ये आइकॉनिक है। ग्रेस प्रिंट भाई, दैट ऑन अ टी ग्रेस भाई, शर्ट, प्रिंट दैट ऑन अ टी शर्ट ग्रिस भाई। मैं सोच रहा हूँ, लेकिन अब wait. Let's wait for ग्रेस 2 भाई, minutes. इट्स लाइक दिस। मान लो आपका एक दोस्त है, ठीक है, आपसे एनालॉजी, पैसे फर्स्ट लिए एनालॉजी ऑफ द सीजन। उस आपसे पैसे लिए उसने, ठीक है, वो पैसे वापस नहीं किए। अब ठीक है, वॉट एवर ही बोरोड फ्रॉम यू, 500 पाउंड, 600 पाउंड, वॉट एवर दैट अमाउंट इज, उसने वापस नहीं किए। तो आपने बोला अच्छा ठीक है, चलो बेवकूफ बन गया मैं। अगली बार उसने फिर से 150 पाउंड लिया, अब तो वापस नहीं। तीसरी बार अगर वो पैसे मांगने आ रहा है और आप दे रहे हो, तो गधे आप। सो बिल्कुल। दिस इज माई दिस इज माई यू नो प्रॉब्लम विथ एफएसजी। ये इन्होंने पहले भी खर्च नहीं किया है, ये अभी भी नहीं करेंगे, राइट? सो दैट पैटर्न इज अगेंस्ट देम। आई हैव नेवर, मतलब पैसे तो इनके पास है, उसमें तो खैर कोई डाउट ही नहीं है कि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। बट यार ग्रिस भाई, जब हमने थर्ड फिनिश किया था, जब एलिसन वाला सीजन था जिसने गोल मारा था, वो सीजन इज वाइडली कंसिडर्ड एज अ बैड सीजन ना फॉर लिवरपूल। क्रिसमस पे हम फर्स्ट थे, सेंटर बैक का इशू हो गया था। They signed who? Ben Davis and Ozan Kabak. 20-25 मिलियन नहीं खर्च हुए इनसे। लास्ट सीजन मिडफील्डर जनवरी, हम मतलब बोल पूरी दुनिया को पता जब वो कि हमको मिडफील्डर चाहिए जनवरी में, नहीं खर्च किया। आर्तुर को लाए, आर्थुर को वो भी समर में लाए थे, राइट? तो दक्ष हंस रहा है, कैसे, दक्ष हंस रहा है, हाँ, हंस तू हंस। आप कैसे तू भरोसा हंस। कर लोगे? आप कैसे भरोसा कर लोगे?
कि नहीं ये देखो, खर्च कर देंगे? So अब listen, trust बिल्कुल नहीं है, ठीक है? हाँ नहीं है। Trust is all time low. Owner के साथ ना trust is all time low. We were anticipating कि ये जो window है ना, if they want to regain any trust, they have to show us this summer. I think this last 10 to 12 days रहते हैं. How long हाँ left? 12 दिन बाकी है 12 दिन बाकी है. I think this is the absolute litmus test now. Which side of the fence? Most are on the most No, on the but Chris bhai, no. But here's the thing, Chris bhai. We can all scream till up. We are all blue in our faces. My point is that guy does not care. I don't think they care. आप चिल्लाते रहो, आप बनाते रहो YouTube पे वीडियो, आप ट्वीट करते रहो, उनको फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क ये पड़ेगा जब तक लोकल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे ना क्रिस भाई. I tell you what's going to involve दो बातें. And often people ask me how do we affect change? The most powerful man at Liverpool Football Club is what is Jurgen Klopp. Until Jurgen Klopp कुछ नहीं ना बोलेगा, nothing can happen. याद रखना. Until he stops protecting them and stops saying everything is fine. Because ये जो season है ना, this summer or the last 12 months is very well documented कि Jurgen Klopp is the boss. Dux जैसे Arsene Wenger नहीं था. मैं समझ गया, मैं यही कहने वाला था. जैसे Fergie था, right? He's got almost total control. He's gone beyond manager. Manager नहीं है वो. अब तो हाँ, he is the part of the institution. Of course, he hasn't got the ultimate control in terms of budget, but everything underneath. Yeah, are you trying to tell me George Schmatka, FSG ने ढूंढा, headhunted him, looked at LinkedIn and looked at his profile and said, yeah, that's the guy, footballing director we need? Of course, he's a recommendation of Jurgen Klopp. So Nidhi, तेरी बात जो है ना, कि back to your point about we can make all the YouTube videos we want. Absolutely. No one on YouTube can affect anything or whatever. We can all give our opinions and have our own debates, personal debates, whatever, for our own satisfaction. Okay? Lekin, the only thing I will say, Nidhi, is, you know, local media, the likes of Pierce, the likes of Joyce, the likes of Lynch, likes of Chris Bascom, these guys, when they start writing articles against or criticizing the ownership, Nidhi, then it starts slowly filtering into the match-going fans. तो क्रिस भाई कितना दूर है हम वो पॉइंट से? आपको मैं भी क्या वही लगता है? पूछना था. What is it going to take? Is it 2 weeks. मैं साफ बताता हूँ. We are 2 weeks away. If there is no established or potential, and we know the names. But अभी करते हैं नाम की, ठीक है? We will talk about the names next. But Wenger protected them for years, 2-3 seasons. Yeah, this is the first season Jurgen Klopp is looking to protect them. Let's see if he does protect them, because he made it very clear. Yade, end of the last season in the press conferences, we need changes, we need this, we need this. मैं बहुत बिजी रहूंगा समर में, मैं फोन के आसपास होऊंगा, उसने बोला था ना. So let's say we got Sabozalai, McAllister, Endo. If we can finish off with a centre back and another midfielder, a la Decore, Palina, we'll go through the names, Gravenberch, then I think that's a good, it could have been a world-class window if we got Casado in, but that's a very solid window. Before we come to the Liverpool fans' opinion, Dux Teresa, from looking from the outside, if that's the case, I've given you 2 scenarios. The one scenario is we've done our business, McAllister, Sabozalai, and Endo, and that's it. Or I'm adding a centre-back of at least equal ability of Konate, let's say, and midfielder, renowned midfielder with Premier League experience or any type of experience. How will you evaluate Liverpool? देखो, I was fully expecting before this whole Caicedo Lavia drama even happened. मेरे लिए तो early pre-season में मेरे लिए Liverpool was bound to be top 3 because मेरे को लगा यार देखो, I am used to a Liverpool कि when I look at it from the outside, जब Arsenal crumble कर रही थी 2-3 साल पहले, Liverpool peak पे खेल रही थी, I used to look at Liverpool with envy कि यार हमें ये मॉडल emulate करना है
जो जहाँ पे वी डोंट नीड सम शेक ओनर, वी डोंट नीड ऐसे इन्वेस्टमेंट वगैरह, वी नीड टू लर्न हाउ टू आउटस्मार्ट द मार्केट। एंड आपको ऐसे प्लेयर्स लेने हैं जो एक बहुत बढ़िया सिस्टम बनाएंगे। तो मेरा एक्सपेक्टेशन तो यही था इस समर में, स्पेशली जैसे मानस ने भी बोला ना, क्लॉप बोल रहा था आई एम रेडी एट द फोन विद, आई बी इन द समर पे फोन के पास बैठा रहूंगा एंड ऑल दैट स्टफ। मुझे लगा कि ठीक है, बेलिंगम नहीं हुआ ठीक है, बट देव साइंड मैकलिस्टर, जोबोस्लाई, क्या मतलब क्या बिगिनिंग है यार। अभी बस 2 और प्लेयर आ जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। बट देन वो धीरे धीरे होता रहा। एंड अभी जो आपने सिनारियो दिया है, देखो, इफ दिस इज योर विंडो, then you will again you will survive getting into Europe just because of Klopp magic, not because of आपकी quality of signings. And I also think कि अगर आपने जो second scenario दिया है, where you get a center back of equal quality और एक central midfielder ले लेते हो, जो भी आपने नाम दिए थे, आई थिंक आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि एम्स फॉर द सीजन क्या थे। अगर आपको चैलेंज करना है टाइटल के लिए, कैन यू रियली अफोर्ड 2 या 3 गेम वीक टू बी लैगिंग बिहाइंड? लेट्स से सिटी विन आज और नेक्स्ट गेम वीक, आप स्टार्ट -9 से करना चाहते हो सिटी के अगेंस्ट, या -8 व्हाटएवर, सिंस यू टाइड योर फर्स्ट मैच? आप नहीं कर सकते ना। आप, हमें खुद पता है, आप 11 पॉइंट की लीड आपकी सिटी के अगेंस्ट सेफ नहीं रहती। इफ यू स्टार्टिंग एट अ डिसएडवांटेज अगेंस्ट सिटी, कि आपका अच्छा स्क्वाड असेंबल हुआ है गेम वीक 3 में, अब वो जेल करेगा, अब वो बढ़ेगा, उसके इश्यूज आएंगे या नहीं आएंगे, उसके बावजूद इफ यू प्लान टू compete विद सिटी, मुझे नहीं लगता वो, इट्स अ केस ऑफ टू लिटिल टू लेट। देयर इज अ रीजन क्लब्स इस समर में दे स्टार्टेड टू वाइंड अप देयर बिजनेस मच बिफोर अर्ली। हमने पहले 2-3 हफ्ते में ही वी गॉट आवर राइस, वी गॉट टिम्बर, वी गॉट हैबिट्स, सो दैट ये लोग जेल कर जाएं, ताकि जब तक एक्चुअल सीजन स्टार्ट हो ना, हमें इनकी क्वालिटीज दिखने लग जाए और हम एक इक्वल फुटिंग पे स्टार्ट करें। एंड वी टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट कि अगर कोई बाकी टीम लड़खड़ाए, वी जंप ओवर दैम। लिवरपूल अभी करेगी, आई थिंक दे कैन हैव अ डिसेंट सीजन, बट जो एम ऑफ द सीजन था इन द समर कि हमें टाइटल के लिए वापस compete करना है, वी हैव टू गेट देयर वेयर वी वांट, यू आर स्टार्टिंग 3 वीक्स लेट। आपने सिटी को 3 हफ्ते का हेड स्टार्ट दे दिया एसेंशियली, या फिर whoever you feel is the champion, आपने उनको 3 हफ्ते का हेड स्टार्ट दिया है। यू माइट स्टिल फिनिश टॉप 4, यू माइट फिनिश टॉप 3, बट जो ओरिजिनल एम था, यू हैव कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट सिंपली बाय बीइंग 3 वीक्स लेट इन द प्रीमियर लीग। Manas, we've signed Endo, but H asks, Grizz, will we sign any more midfielders after Endo? Decore, Crystal Palace, Gravenberch, he asks, basically. देखो Which profile of player are you insisting? I think it's an obvious question. Like, the reason why I'm asking is Gravenberch the DM hai nahi hai. Decore is a DM, Palina is a DM. आज strong link sign है खबरांच के Gravenberch is a target. I know for a fact we targeted Gravenberch at the start of the window, and it made sense to start him at the target of the window because we needed players. उस वक्त बान ने हमें बोला था कि don't bother, we're busy, we need him. But then Tuchel and him have had a falling out. He may be available. यार वो नहीं समझ आंदी कि Gravenberch makes any sense, or will you still take him? मैं निधि से यही बात कर रहा था ग्रिस भाई कि आज देखो हमारा गेम प्लान क्या थी, हम लोग एक फार डीएम लेंगे, लाइक रियली गुड डीएम लेंगे, तो डीएम प्लस बायजेटिच होगा, जो बायजेटिच प्रॉब्ली अंडरस्टडी हो सकता है। बट अभी हम ऐसे सिचुएशन में, अभी हमारे पास पोटेंशियली 2 डीएम्स है, बायजेटिच, एंडो, और अगर आप डकोरे भी ले लोगे तो 3 हो जाएंगे। नाउ सडनली फ्रॉम बीइंग इन अ सिचुएशन जहां आप फील कर रहे थे हम वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, आपके पास 3 हो गए एक ही टाइप के प्लेयर। आई एम स्टिल ओके एंटरटेनिंग दैट, बिकॉज अब देखो एंडो को आप सपोर्ट कर, देखो क्या है ना कि हम लोग वी मिस्ड आउट हमारे टारगेट्स, तो एंडो की तरफ थोड़ा ज्यादा लगाव हो रहा है, प्यार हो रहा है कि ये बंदा कुछ करेगा हमारे लिए। बट अब स्टुटगार्ट के बाद लिवरपूल आना एक बहुत बड़ा स्टेप है। आइडियली आई वुड लव 2 प्लेयर्स, एक सेंटर बैक, अनदर डीएम होगा, पता नहीं ऑनेस्टली। बट ये नेक्स्ट, आपने ग्रिस भाई एकदम सही बात बोला, नेक्स्ट 12 दिन आर सो इम्पोर्टेंट एफएसजी के लिए, क्योंकि अगर आप अपना क्लब फुल सेल पे डालते तो एक बिड आती, हम सब जानते हैं कहाँ से आती। आपने बोला हम सेल पे नहीं रख रहे हैं, हमको इन्वेस्टमेंट्स आएंगे थोड़े, वो इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आए अभी तक, पार्ट सेल भी नहीं हुआ है। आपने देखा है कि आपका क्लब चैंपियंस लीग मिस आउट किया है, क्यों किया है सबको एविडेंट है, पता है। अभी आपको वापस वो स्टैचर पे लाना है, तो अगर आप बैक नहीं करोगे अभी, फिर तो लोग सड़क पे आ सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है।
सेल पे नहीं डाला, पार्ट सेल किया नहीं, और अभी आपने अगर नहीं किया बिजनेस, तो काफी लोग पिस ऑफ होंगे, और होना भी चाहिए, बिकॉज अभी नहीं तो कभी नहीं, मेरे को लगा ग्रिस भाई, बिकॉज अगर अगर हम अभी एक्ट नहीं करेंगे ना, तो हम लोग This बहुत, was the window they had to बिकॉज have. हम लोग बहुत पीछे फॉल्ट कर जाएंगे, पब्लिक को समझ नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, मे बी दूसरे लोग को समझ नहीं आ रहा है जो दूसरे क्लब्स को सपोर्ट करते हैं। लिवरपूल फैंस को समझ आ रहा है, आर्सेनल आगे बढ़ रहा है, न्यूकासल आगे बढ़ रहा है, यूनाइटेड तो स्पेंड करता ही है, चेल्सी भी करता ही है, सिटी है भी। अगर विला अभी आ रहा हम, है, विला, एस्टन विला आ रहा है पीछे से। आर्सेनल विला आ रहा है, अगर हम अभी नहीं करें ना भाई एड्रेस इश्यूज, तो बैक टू बैक ईयर्स अगर आप चैंपियंस लीग में नहीं हो, ग्रिस भाई हमने ही Disaster. देखा है, 6-7 साल हमने गुजारा है विदाउट चैंपियंस लीग, बहुत मुश्किल होता है। कैसे, Disaster. तो फिर कैसे कैसे ठीक हुआ है? एक फरिश्ता आया जिसका नाम था योर्गन क्लॉप, ठीक है, अब नेक्स्ट योर्गन क्लॉप ढूंढते पड़ेगा हम लोग। Nidhi, I want to ask you, because तूने ये सब्जेक्ट शुरू किया था, so Zafir Nash says, Grisbaji, FSG haven't spent in 8-9 years. How will 8-9 days make a difference? Why do you still give them a chance to regain your trust? Yeah, Zafir Nash, we can't say they haven't spent in 8-9 years. What we can say is they haven't spent enough, according to us. We haven't done enough business. So 8-9 days can make the difference. For example, Zafir Nash, for example, if we had bought Casado, then I think definitely me, Manas, and Nidhi would be doing Bangra today on today's show live. So it does make a difference, right? You get my point. It can. Couple of moves can make the difference in the mood, in the attitude, in the belief. So the reason why I give them a chance to regain my trust is because I'm a supporter of the club. I'm not a supporter of FSG. मैं तो क्लब को सपोर्ट करता हूँ यार. I want my club to do well. So I need my owners or custodians to do well. So I have to hope that they support them so I can support my club even happier. So it's not about backing FSG. It's about backing my club and hoping and praying. But if they don't, we've discussed it. लेकिन निधि पूछने वाला था कि if we do have a chance to sign one more DM or midfielder, if I give the names to you, Doucouré, Florentino Luis, Palina, Gravenberch, Fofana. ग्रेवेनबर्च तो डीएम है, ग्रेवेनबर्च तो डीएम है ही नहीं. ही इज नॉट अ नंबर 6. सी I'll be honest, Riz bhai, मैंने फ्लोरेंटिनो लुइस और वन मोर नेम यू mentioned, right? Palhinha को तो देखा है. Fofana. Yusuf Fofana. I have not seen them play. I've only read about them. From what I've read, Florentino Luis के numbers seem the most impressive. His age profile fits and everything. Doucouré को मैंने खेलते हुए देखा है, तो he's 23, so age profile also it's something that works. Palhinha, yes. Look, it's at this point, because can't be choosers, I'm not going to say no to any DM that comes in who's ready. But अगर आप मेरे को चूज करने बोलोगे प्योरली बेसिस जो मैंने देखा, आई वुड गो फॉर डुकूरे. बट इट सीम्स एज इफ फ्लोरेंटिनो लुइस का जो सीलिंग है वो हाई है. ग्रेस भाई, आई ऑल्सो वांटेड लाइक आपसे एक चीज मुझे पूछनी थी. लाइक you the aims for the season were very high. एक सीजन फॉल्टर करने के बाद लिवरपूल यूजुअली बाउंस बैक, एक अच्छे सीजन होते हैं एवरीथिंग. मुझे ये जेन्युइनली समझ नहीं आया कि द काइंड ऑफ बिट जो लाविया के लिए जारी थी, पहली बात डिड नॉट मेक सेंस. यू आर इंक्रीमेंटिंग 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन पे छूट गया. पहली बात, कीपिंग दैट इन माइंड, आप अभी भी मतलब व्हाई यू स्टिल ट्रस्टिंग एफएसजी की 8-9 डेज में अब कुछ कर लो? देव मेस्ड अप, दे हैड द अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस द इशू ऑलरेडी. अब तो इट इज नाउ सेविंग, मतलब आग बुझाने वाली बात है ना. नाउ दे पुटिंग आउट फायर्स. लाविया वाज अ सॉल्यूशन रेडी टू बी. So I give my opinion. मैं अपना ओपिनियन देता हूं, फिर आप दोनों ओपिनियन देना. एक सेकंड. we started screwing up from Bellingham. 100%. अगर आपको नहीं खरीदना था तो you should not have wasted so much time. We started screwing up 2-3 windows ago. We started screwing up when Edwards left. And the reasons why Edwards left will come out, I believe, will come out in a couple of months. That's my personal belief. ठीक है?
the main local journalists will bring out articles why Edwards and Ward and a few of the backroom staff left. Ian Graham. इसीलिए I don't want to speculate until those reports come out. Okay? That's when we screwed up, because that's the only system that worked. Ward, Edwards, Klopp, working in tandem with the data analyst people. We know it worked because we won every trophy under them. The one season where they left and backroom staff left, we started messing up. The reason why how can they save it? They can't rectify the mistakes, Daksh, that they've made in the last year or so, 2 years. They can save this window at least. One steps, at least they can move forward. I'm not saying they are back in the good books and FSGR, Zindabad. Of course not. Of course not. But at least we can have renewed hope and confidence about the season. So beggars wait, beggars, or I think Mana said it, beggars can't be choosers. So we can't say, oh yeah, finish. Number 6 की जो position होती है ना, if they don't bring in a number 6, established number 6, and a centre back, then we have no absolute zero faith. Even people on the fence, and I'm not on the fence because I don't think people need to. Both log channel जो मेरे देखते हैं ना कहते हैं कि Grizz is an FSG supporter. I'm fucking so not. I'm not an FSG supporter. I'm a Liverpool supporter. What I'm saying is I've never been FSG out, FSG in, because that's irrelevant to me. I want the custodians of my club to do the right thing for my club every single time. So whoever is in FSG, Argos, Sainsbury's, Tesco, Marks and Spencer, do the right thing for my club. That's what I always say. And if you're not doing the right thing, then leave and let someone who can do the right thing do the right thing. Just a couple of super chats, Nidhi, but tu aa jata. Number 6 की जो position होती है ना, it is the most important position right now in modern football. मतलब ये मेरे जैसा, like somebody who's not educated in football, I'm just speaking as a fan, right? पूरी दुनिया को पता है. There is a reason यार, आर्सेनल ने मतलब इतना अच्छा सीजन हुआ, उसके बाद they went out and spent 100 million on a CDM, right? City has Rodri. Man United का पूरा rebuild का मतलब आप रियल मैड्रिड का CDM उठा के ले आए, right? Newcastle, Bruno Guimaraes, DMs लिया pretty much essentially. Bruno Guimaraes, Sandro Tonali. Do you not see it? Again, nothing against Endo. I love the Endo signing. मेरे को I still feel he's going to be very very good and अपने लिए अच्छा है. But यार, he's 30 years old. अगर Endo मतलब वतारू एंडो इतना ही अच्छा होता तो he should have been on, like, as a backup. I don't mind him at all. So but listen, number 6 पे you screwed up Caicedo, you screwed up Lavia. यार दे दो फ्लोरेंटिनो लुइस के लिए पैसे. चुआमेनी you screwed up. अब दे दो फ्लोरेंटिनो लुइस के लिए पैसे. आप we can't look. आप डुकुरे के कॉन्ट्रैक्ट में लूपहोल ढूंढ रहे हो. अरे just pay the money. Like, what can we then segue into this subject, because I think this is very important that Urine Bolake, and I think he makes sense. He says there seems to be two conflicting schools of thought in the transfer strategy. One is coming from Klopp and one is coming from the analytics team, and that's reflected in the quality of players that are being considered. Why nidhi wale baat ke scramble thinking, kabhi ye kabhi wo. Sometimes this style of player, Gravenberch to Doucouré, Zameen Asman ka fark. For example, even Yusuf Fofana, who I'm a massive fan, people that know and been following me for a little while will know that he's one of my favorite players in Europe. And I'm buzzing that I know we have interest in him. But he's not a DM. So then I'm confused again. Even though he's a favorite player of mine, I'm confused. और सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये काफी अनकैरेक्टरिस्टिक भी है ना. मतलब मैं आज सुबह मानस निधि को कर रहा था इन टर्म्स ऑफ हाउ यू आर अप्रोचिंग नेगोशिएशंस आल्सो, राइट? इट्स वेरी बाइपोलर इन द सेंस समटाइम्स विद एंडो लिंक next day within 24 hours he's at your training facility, he's giving his medical and everything. For Doucouré, drag Lavia, drag and very दक्ष ये जो इशू है ना, 1.5 साल पहले तक जब तक एडवर्ड्स था हम लोग प्राइड लेते थे कि भाई हमारा क्लब भाई साहब पता ही नहीं ब्लूप्रिंट है, ऐसा ही रन होना चाहिए.
एकदम, अगर आपको सिटी को हराना है तो ये ब्लूप्रिंट है भाई, और वो ब्लूप्रिंट 18 महीने में चॉप हो ब्लू गया भाई। फिल्म बन गया, ब्लू फिल्म बन गया। लेकिन हम कैसे हम वापस लेकिन कैसे वापस लाएंगे? हाथ पैर जोड़ लो, ओ मारा हाथ प्राण, पैर जोड़ लो, माइकल हाथ एडवर्ड्स, पैर एडवर्ड जोड़ लो, मिडफील्ड है। माइकल एडवर्ड्स के हाथ माइकल हाथ पैर जोड़ लो, हाथ जो पैर भी जोड़ है लो। दिक्कत, ईगो असाइड रखो, हाथ पैर जोड़ लो। कहीं कहीं ना कहीं कहीं Asad, ग्रीजमैन, कहीं Asad कहीं says ग्रीज, we need Asad bhai doesn't say we need an oil shake. We need an oily shake. Oily हाँ, shit. That oily sounds dirty. We don't need a, oh yaar, we need an oily shake. But listen, o din kiyan wapas aavsan mara prao. O din kiyan wapas aavsan. How? When are we going to get them back? Can we fix it by getting a DM? So, for example, my first choice, even though Yusuf Fofana is a magnificent player, one of my favorite players, I need Liverpool to recruit, and I think I will be 65 to 70% satisfied with the window if we end the window with Dokore, because I rate him very highly. I don't care how much he costs. मी कोई फर्क नहीं पाया, हमारे पैसे नहीं पाई। अंकल ने 10 छोड़िया कि उसके कोल करोड़ पौंड आने। So if And the there is, Corey, and if the sorry, Corey and costs sorry us to 20 interrupt, million, कोई मसला नहीं। and sorry वो to पैसे- and sorry to interrupt, Grizz bhai. Inefficiency has a cost. yeah, How you screwed 100%. up, how you screwed up in the You pay for Enzo it. and Caicedo, Enzo and the sorry Enzo बोल रहा हूँ, how you screwed up in the Caicedo and Lavia, उसका तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी ना उसकी। पड़ेगी। नहीं, अभी दिक्कत क्या है ना, सॉरी दक्ष, है ना, तो थोड़ा आउटसाइडर और हमारा आधे घंटे से ना लिवरपूल ना की कोई बात नहीं कर कोई रहे नहीं हैं। मैं भाई मेरी he's बात a football, अगेन, he's a football man. मैं वापस आई कम बैक। अगर तुम 60 मिलियन डाल के डोकोरे ले भी लो तो बाकी 30-35 मिलियन तो बाकी है ना। आपने आपने काइसेडो के लिए तो दिए थे ना 110, आपने अभी 19 मिलियन में साइन किया है एंडो। अगर आप 60 भी दे दो डकोरे के लिए तो हो कितना हुआ, 79 मिलियन। ओके, 110 सेंटर डाला बैक था के लिए ना। पैसे हैं, सेंटर बैक हाँ के तो लिए करो, पैसे सेंटर हैं। बैक से करो। सोफियान अमराबाट अवेलेबल है। देखते हैं, लिसन, देखते हैं कि क्या बनता है, देखते हैं क्या बनता है इन द फाइनल फ्यू डेज ऑफ द विंडो। बात आती है, आई गेस, बिग गेम। I don't know. Do you think it's the biggest game of the weekend? I think so. Well, you see the Manchester United Tottenham in terms of history, but right now I'd say Newcastle versus Man City, guy. Daksh, tere paas aata hun. This is on the back of Super Cup. I know it didn't go to penalty. Kya bolte hain? Extra time. Like it's still penalties. They played a strong team. Newcastle कौन बोल रहा था? निधि बोल रहा था कि he thinks Newcastle are very very dangerous. If you सब ये calculation बनाओ, तो this equals danger for Man City, you know? I think अगर आप न्यूकासल की सिर्फ बात करो, आई थिंक न्यूकासल हैज द मोस्ट बैलेंस स्क्वाड। उनके पास मे बी अगेन कीपर को छोड़ के दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकअप इन एवरी पोजीशन। उनका मिडफील्ड, it's a great mix of technical players, Bruno Guimaraes, Tonali, physicality, again, both of them, plus Joe Linton. Fast players, Anthony Gordon है, Isak है, tall, strong, technical, great finisher, Callum Wilson, right? Almiron चलो purple patch है, right wing पे उनको थोड़ा सा fix करना है. So, this is a squad which is very balanced. It is ready, I think, to make sure at least that they do not, ये जो top 4 में आए, हम गलती से नहीं आए, we belong here, we want to stay here. And ये धीरे धीरे करके they've made some very shrewd signings. Now you can argue that yes, this is not the 100 million signings they've made, but they have made some very good signings. Getting Tonali, absolutely phenomenal. I think अभी लुइस हॉल लिए उन्होंने चेल्सी से, right? ये लेफ्ट बैक भी reinforce हो गया, लिवरामेंटो के साथ राइट बैक भी reinforce हो गया. So they've reinforced their defense, they've reinforced their midfield. अटैक में उनके पास दो हावी बार्न्स भी हैं, अटैक में उनके पास दो ऑलरेडी अच्छे स्ट्राइकर्स हैं. Where is the weakness in the squad? You can say unfortunate injuries can derail any team. इनको तो वो भी नहीं करेगी, मतलब they've at least fortified themselves against that eventuality also. क्योंकि ये इनको पता था कि चैंपियंस लीग का जो है सीजन, ये बहुत भारी पड़ेगा, मतलब बहुत स्ट्रेस होगा, नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली भी होगा. इन्होंने ऐसे प्लेयर्स नहीं लाए. ऑफ कोर्स हावी बार्न्स यंग,
energetic. Same with Anthony Gordon जो last season लाए थे. Same with Livramento and Lewis Hall, very young. But they also have a Tonali who has played in the Champions League. Tonali who is a leader and a presence. उसको थोड़ा acclimatize करने में time लगेगा. They have tall defenders, they have fast defenders, they have a decently good goalkeeper who is in contention to be England's number one as well in Nick Pope, and a manager who is coaching really well as well beyond his means for sure. मतलब coaching out of his boots. एंड हर भाई उनके पास ऑल्सो सॉरी दक्ष हाँ वन ऑफ द बेस्ट सपोर्टर्स Khanage. इन इंग्लैंड है नहीं कौन? बेस्ट कौन? सपोर्टर्स इन इंग्लैंड वन ऑफ द हाँ, बेस्ट हाँ, Yeah, हाँ, of हाँ, course, without doubt, 100%, 100%. without doubt. Yeah, and that aside, also, they have a great backroom staff. Dan Ashworth, great backroom staff to identify these talents, to close these deals. They have owners who are willing to take them to the next level. It is the perfect recipe for a team जो कहते हैं ना status को तोड़ देगी. They are there. They're coming back to his glory days. न्यूकासल की हम पीक सोचते थे कि ठीक है यार, अच्छा सीजन भी जाएगा तो फोर्थ तक आ जाएंगे या नहीं. दे आर रेडी टू टेक ओवर यार, एंड देर वेटिंग. ऑनेस्टली बताऊं, देर वेटिंग कि जो टॉप 6 जो हम कहते थे उनमें से एक टीम फ्लाउंडर कर जाए. तुम चूक के देखो, हम तुम्हारी जगह ले लेंगे. एंड ये होगा. इफ स्पर्स मैस अप, वो स्पर्स की जगह ले लेंगे. इफ चेल्सी मैस अप, चेल्सी की जगह लेंगे. इफ लिवरपूल मैस अप, इफ आर्सेनल मैस अप, इफ यूनाइटेड मैस अप, दे विल टेक दैट प्लेस एंड दे विल स्टे देयर. यही सबसे अच्छी बात है उनके लिए. They will stay there. So that's it, yeah. मानस I कल think- का क्या सीन है इस गेम का? It's very difficult. Look, obvious thing to say is City यार, Etihad City game. नहीं सिटी थकी रहेगी. नहीं, सिटी नहीं, थकी रहेगी. नहीं. बहुत टफ गेम था अगेंस्ट सेविया. 90 मिनट खेले. Stones is out, Diaz is out. Yeah, they have 4 players out भाई. नहीं ये Diaz ठीक हो जाएगा. वो वैसे माइंड गेम्स Okay, हाँ, Diaz का था, but Stones is out, Bernardo is out, Bernardo is And out. Kevin De KDB Bruyne. is out. हाँ. Kevin De Bruyne is out. Yep. So है इश्यूज उधर. अब ना सिटी के पास तो स्क्वाड है ही टू डील विद हाँ. एवरीथिंग. पकेटा का डील इज गॉन ऑफ, सो वो क्रिएटिविटी थोड़ा मिस करेंगे. देखो यार, जो भी टीम में केविन डे ब्रुयने अगर नहीं खेले वो मैसिव मिस होता है. सो सिटी विल मिस केविन डे ब्रुयने इन दिस गेम, बट एतिहाद पे. Yeah. सो मेरे को लगता है कि वो निक कर सकते हैं गेम. इट्स सो वियर्ड, राइट? City Look, the Newcastle best है Newcastle के. Listen, जी हाँ, सी Newcastle ने बारिश गल्ला करने हैं ना पे कि champion and like Dux was telling us, किया. This is a test for them then. Prove it then. नहीं ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. ग्रिस भाई हाँ. की स्टेटमेंट मारे. If ये they अगर win ये लोग ने if कर they दिया win ना, it is a massive statement. क्या होता है ना, मैं आपको एक बात बताऊं ग्रिस भाई, जब भी हम लोग टाइटल जीते ना, डू यू रिमेंबर द सीजन व्हेन वी वन द टाइटल? हम लोग क्लब वर्ल्ड कप जीत के आए, ठीक है, और फिर हमने लेस्टर को 4-0 स्मैश किया था, अगर आपको याद है. वो एक स्टेटमेंट था. वो मैच के बाद मेरे को लगा Done. हो गया done. नहीं हो गया डन तो नहीं, अभी जो भी आए सामने हम लोग देख लेंगे. नहीं हो गया done था. एक कॉन्फिडेंस आ गई थी. मेंटालिटी मॉन्स्टर्स तभी निकला था. सो अगर न्यूकासल एक पॉजिटिव रिजल्ट निकाल ले, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. सिटी थकी हुई है, इंजर्ड है. अगर वो लोग ने निकाल लिया, वो सोचेंगे कि आई एम नॉट सेइंग टाइटल. No, it's too early. But getting 3 points at Etihad, amazing. It will be there. It will be a massive भाई वो statement. लोग अगर सिटी को हाइपोथेटिकली हरा दे एतिहाद, तो उनका नेक्स्ट गेम किसके अगेंस्ट है? लिवरपूल के अगेंस्ट. वो अगर लिवरपूल को हरा दे, देन दे कि भाई वी हैव प्लेड विला, जिन्होंने स्पेंड किया है, अच्छी टीम है, सिटी को हराया, लिवरपूल को हराया, फिर उनको क्या लगेगा ना कि भाई वी कैन. 100%. सो मेरे ये को बोलने वाला गेम का था- इंपॉर्टेंस, ये गेम का इंपॉर्टेंस न्यूकासल के लिए ज्यादा है कंपेयर टू सिटी. न्यूकासल के लिए आई एम नॉट सेइंग इट्स मोर इंपॉर्टेंट या मस्ट विन है, बट अगर वो जीत गए ना, सिटी के लिए क्या 3 पॉइंट्स है, न्यूकासल के लिए मोर देन 3 पॉइंट्स है ये गेम. It's very similar to जैसे charity shield की बात कर रहे थे, right? In Arsenal, Man City, it's charity shield. Nobody Yeah. cares. It's charity shield. Like in the confidence Arsenal would have got to beat City going into the season. Nidhi ऐसे ही है ना कि as Manas said, if Newcastle win tomorrow, decide title का कुछ नहीं होएगा यार. It's second week. We know that. We're not being stupid. Yeah. We're not being reactive. लेकिन जो confidence boost होगा ना कि yes, we are sitting on the big table now. Mhm. See, if you
अगर आपने पूरा एनालिसिस सुना होगा, बहुत सारे लोग जैसे बात कर रहे हैं ना, ऑलमोस्ट लाइक नॉट एवरीबॉडी बट 70 to 80% लोगों ने ये बोल दिया है कि दिस इज द सीजन वेयर वी सी न्यूकासल फॉल ऑफ, क्योंकि वो कोप नहीं कर पाएंगे डिमांड्स के साथ, और मतलब चैंपियंस लीग इज अ बिग रिक्वायरमेंट, और वो सब सारी बातें सच है। तो उस हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी आई विल स्टिल, ऑफ कोर्स हम लोग ने वी डिड प्रेडिक्शंस ऑन आवर चैनल, बाबा का चैनल, I will still back City for the win tomorrow. But if Newcastle pull this off at Etihad with Haaland in the team, who's going to start? Then again, जैसे आप लोग बोल रहे हो ना कि they are like कि भाई we are there, and this is what I meant when I said कि there are going to be more teams in the equation. I am saying even if they, I am saying the manner in which, for example, let's say City is leading 1-0 चल रहा है, they score a goal past 80 minutes or something, late equalizer भी मार दिया, that is going to help their confidence so much, right? And because it's a little bit of a us against the world वाली चीज भी है। सिटी का तो नहीं, न्यूकासल का। अच्छा, People are waiting for them to fail, right? Default settings आ जाए न्यूकासल हाँ, की, गिर जाए, कि ये तो तुम तुक्के लेकिन से आगे एक बार कर लिया, पॉसिबल। असद कि पूछ एक रहा बार था कर लिया, Greece is from Jhelum or MP? I'm from MP, Asad. You recognized Mari boli thi samay lag gaya फिर मैं कुछ है ना वहाँ. But Jhelum is like next door to me, so I'm like in between, but I'm MP. MP means Mirpuri. मीरपुर। इंडिया में हमारा मध्य मध्य प्रदेश, प्रदेश होता है। Oh, there's मध्य a प्रदेश, Mirpur in नहीं, You're मध्य the- प्रदेश, मध्य प्रदेश इज द सेंटर ऑफ इंडिया। तो मैं वही सोचा था, एमपी ये क्या हो गया? That's where I studied my graduate. That's where I studied my graduation. अच्छा, But anyway, coming back to this. So न्यूकासल के लिए बहुत बड़ा गेम है ये। बहुत न्यूकासल बड़ा के लिए game है। बहुत बड़ा गेम है, and it can get a little hairy for City. I'll still back City, but KDB नहीं है, बर्नार्डो नहीं है शायद, डियास नहीं है, तो I can and see draw, guys. I can see draw. I can see it. दक्ष खुश हो जाएगा, you know that tomorrow मैं night. खुश होऊंगा, बट मैं listen, हम चारों का एक कॉमन ट्रॉमा है। Yeah. हम चारों का एक common trauma है। गेम वीक 38 तक दक्ष खुश नहीं होगा। मैं ना, कुछ ना, नहीं, ना। It doesn't mean anything. It doesn't mean anything. जब चलो। तक वो या तो वो 115 के जो चार्जेस है उसके, या तो -30 जल्दी से लगाओ या फिर आई एम नॉट भाई बिलीविंग वो एनीथिंग। don't hold your breath. हाँ, Don't वो hold तो your कभी breath. नहीं होने वाला। बट मैं तो कह रहा हूँ, I think, yeah, but listen, I still think Nidhi to सही बोल रहा है कि this season there's going to be a few teams in there. It's not going to be a procession. तो आते हैं कि again I think another crucial game, not crucial but बाय द वे मैंने फिक्सचर्स शेयर कर दिए स्क्रीन, आपको ऐड करनी, यू कैन ऐड देम। very interesting game, यार. Very interesting game. Spurs Man United. Oi. सदके जावा या डस के जावा. Spurs Man United, man. Like, normally this has got history behind it. It's always a cracking game. Man United always turn up at Spurs and run away with it. This season, Ange's first game of the first home game season, the atmosphere should be good. Minus Harry Kane, though. Minus ye kitna effect hoega, yaar. But Man United didn't look good in that first game. Didn't look good. मेरे को लग रहा है ये गेम में बहुत गोल्स आने वाला है। हाँ, और रिचार्लिसन खेल रहा है, तो आई थिंक मैं ये क्वेश्चन निधि को देना चाहता हूँ, बिकॉज निधि एंड रिचार्लिसन इज अ मैच मेड। अरे भाई साहब, निधि जब गोल मारता है, निधि ऐसे ही करता है। निधि तू बता यार। I want to hear what निधि has to say, because जहाँ रिचार्लिसन इन्वॉल्व होता है ना, तो मैं निधि को दे देता हूँ। अब मैं क्या बोलूं रिचार्लिसन के बारे में? नहीं, ये गेम के बारे में मैंने तो पहले भी बोला, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ गेम, बट यूनाइटेड टू निक इट। Oh, United to nick it, yeah? तो still United को फेवर बना रहा है? फेवर मतलब मैं On तो the बता basis रहा हूं, of मुझे on the क्या basis लगता of है। history या on the basis of Spurs being Spurs? नहीं, आई थिंक सी स्पर्स ब्रेंटफोर्ड का मैच मैंने देखा था ग्रिस भाई। आई थिंक स्पर्स बर्स्ट्स में अच्छे हैं, जैसे फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा, सेकंड हाफ में भी अच्छे थे वो, बट उनका ना वो जो डिसाइसिवनेस है ना, वो अभी मिसिंग है, स्पेशली इन द फाइनल थर्ड। वो होगा अभी ना, यू हैव लॉस्ट हैरी केन,
तो it is मतलब again Richarlison, so मतलब क्या वो तो सेम होगा नहीं, राइट? तो वो तो आउटपुट मिसिंग है, एंड आई फील दैट यूनाइटेड that way are slightly more clinical, although I granted वुल्व्स के साथ उतना अच्छा नहीं खेले थे. Not that I'm happy saying this, but I think United will nick it. क्या है ना कि आप सॉरी क्रिसबैक, स्पर्स लास्ट सीजन 8th फिनिश किए, ठीक है? अभी आप 30 गोल निकाल दो हैरी केन के, तो क्या है फिर? थोड़ा स्ट्रेस है, लेकिन stress हाँ, I agree with you, लेकिन आज जो मैनेजर है ना, ये बड़ा टॉप ना मैनेजर है. पोस्टेकोग्लू, yeah. So देखो, I थोड़ा was- टाइम लगेगा. एंज पोस्टेकोग्लू इज गुड ग्रिस भाई, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा. let मतलब me tell you, let me give you a bit of insight into the players' mood. So I had the pleasure of spending a bit of time with Spurs reserve keeper Alfie. Embarrassing for me, I can't remember his surname, but I know him as Alfie. He was in Sweden on loan last season, and he was just giving me a bit of insight into the training and the mood in the camp. And Obore Asike, he goes, this guy has come in and he's told us there is absolute, and this is important, guys. There is no pressure on you guys to do anything this season. I want you to just bring back the feel good factor. And he says everyone is buzzing in training, everyone is a fresh lease of life. He goes, it's like day and night compared to Conte. Conte to assi sare jaanne hain, Conte ki aja banda, ki aja manager hai, right? He goes, this guy is the total opposite. It's like Father Christmas has come in. He goes, we knew Harry Kane's going. He said to me, we knew Harry Kane's going. Like he's Alfie Whiteman. He's brought a brilliant vibe. And this is why I think it's good, because Spurs need a good feel factor. Spurs at home, first game against Manchester United, Spurs will be buzzing, bhai. The stadium will be buzzing. Alfie Whiteman. Yeah. मतलब बहुत एंटरटेनिंग गेम होने वाला है. मेरे को लग रहा है कि कम से कम 4-5 गोल होने वाला है मैच में. आई जेन्युइनली एक्सपेक्ट, मेरे को, बिकॉज स्पर्स का जो भी मैंने फर्स्ट गेम देखा कि बहुत ही वेरी डिफरेंट था. दे वांटेड द बॉल, दे वर पासिंग इट अराउंड, एंटरटेनिंग था. तो whether that translates into them beating Manchester United मेरे को पता नहीं, but I am excited as a neutral. मैं ये सीजन स्पर्स को देखना चाहता हूँ. वैसा First time in feeling. a long time. First time in a long time. Spurs इतनी boring team है यार. I hate watching them under Conte. Honestly, कसम में कोई मजा नहीं है, कोई मजा नहीं. इस बार मेरा मन है देखने का. ये मैच में देखूंगा पक्का ग्रिस भाई, लाइक यू नो. Madison, Son, Kulusevski और एक प्लेयर है, हमारी नजर उस पे है, Yves Bissouma. He's gonna have a breakout season. No breakout season. He's had a breakout season. Lekin we're gonna see the best. He's gonna get back to his best, I think. मेरे हिसाब, I for this fixture यार, I will still give the edge to United because I think जो निधि भाई कह रहे बिल्कुल सही है. I think Spurs going forward बहुत अच्छी है. Postecoglou, great attacking patterns, great attackers themselves. Spurs आगे जाते हुए बड़ी अच्छी है. जो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी which against Brentford was, Brentford बड़ी क्लिनिकल थी काउंटर पे. वो एक बॉल मारते थे, एम्बुएमो भागता था, और यूनाइटेड से बेटर काउंटर अटैकिंग टीम बताओ मुझे. रैशफोर्ड है, ब्रूनो है, एंटनी, एटलीस्ट लोग तेज भागते हैं, डायरेक्ट हैं एंड फिनिश भी कर देते हैं. इफ यू गिव रैशफोर्ड द स्पेस टू स्कोर अ गोल, वो कर देंगे. सो दे आर एसेंशियली प्लेइंग अ बेटर ब्रेंटफोर्ड आल्सो, इन द सेंस दैट यूनाइटेड आर माइल्स बेटर देन ब्रेंटफोर्ड इन टर्म्स ऑफ काउंटर अटैकिंग. मैंने जैसे बोला मैं समझ गया. अभी सारे It could come back to haunt you. They are playing a better Brentford match. बोल दिया तूने. अब तो बोल दिया, अब you can't take it back. But can't I take think it बता. हाँ, but यार it's essentially Spurs का defense उतना खास नहीं है. They're still rolling with Emerson Royal, Dyer, Davinson Sanchez. Left back पे कौन है मुझे नहीं. तो यार I think United, यार, I think United will have their number. I don't see a Spurs win. I can max see a Spurs draw, but United win is much more clearer to me. ठीक है, no problem. निधि तू भी मैन यूनाइटेड को कह रहा था ना कि मैंने बोला ना, I think they'll nick it. United, I think they'll nick it. I think this is the most draw written all over it you will ever find, I think. But I'm different. I think both teams struggle to score goals. Manas बोल रहा था ना कि he thinks going to be loads of goals. I don't think there's many goals in this team. Both teams. If you take away Rashford, उन्होंने कोई भी नहीं गोल होने.
if you take away Kane, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ goal ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ. I think there's not going to be many. There's going to be chances, but I think there's not many finishes on either side. Urine says, in my opinion, time is going back to the Liverpool chat. Time was wasted on Jude and Shu. More time on overreaching or unavailable people. Some of it was timing, given the Real were looking to refresh. Look, timing is massive. You're right. If Endo was our fourth midfielder after we brought in the third midfielder, I think all of us would have been happy. Yeah. Oh, Yeah. utility, Different man. mood. Different Different mood. mood. So timing is key. Timing is key. But guys, thank you very much for tuning in. I think we're going to wrap it up there. Brown Monday are back. Hope you enjoyed it. मजा आया होसी. अगर मजा आया तो लाइक ना बटन प्रेस करी छोड़ो. ग्रेस भाई, मैं एक बात बताऊं, आप जो भी लैंग्वेज में आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, पूरा समझ आ रहा है. अगर आप कुछ हाँ, आपको लग रहा है, हाँ. अगर आपको लग रहा है कुछ अलग भाषा में बात कर रहे हो, नहीं ये मुझे सब पता ना. समझ तू वही समझदार मारा प्रा. तुझे मन कपड़ा तू देखो, पूरा of course, समझदार है. वो तो- सारा समझ आ जानी है. नहीं पता है. तू पढ़े लिखे बंदे. But listen, guys, if you haven't talk about Chelsea. और क्या यार, क्या चेल्सी ने बारे जैसी भाई है. चेल्सी भी कोई चल ठीक है. 2 मिनट चेल्सी ने बारे गल्ला करने हैं यार. Chelsea play Palace. No, Chelsea play West Ham. West Ham. Sunday? Away. West Ham, Away, हाँ, away. हाँ. Interesting game actually. Interesting game. Nidhi, Chelsea have to win every game. Have to win. I mean, Chelsea have to win every game. कोई बहाना नहीं मारे भरावो. कोई बहाना नहीं. You have to win every single game. वरना बेइज्जती होसी. और ग्रिस खान सब तो ज्यादा बेइज्जती ग्रिस खान को. But यही Nidhi, बात है. Chelsea, West Ham, interesting because they haven't got a great record there. West Ham somehow Yeah, it's- always get a result against them. it's like the 78th London derby. I think Chelsea's gonna win. Chris, bhai, come on. हाँ. Chelsea. I think so too. I think they have to make some small adjustment क्योंकि उनको injured है. But उसके अलावा यार, मतलब कौन सी पोजीशन आप कह सकते हो कि चेल्सी वीक है? चिलवेल up front निकलेस जैक्सन, I think he's decent. उसको सर्विस मेरे हिसाब से चाहिए and I think उसको मिल जाएगी. Agreed. But we were talking about finishes. Both teams again haven't got finishes. West Ham. But चेल्सी के डिफेंडर गोल मार जाते हैं ना ग्रेस भाई. वही है. रीस जेम्स मार देगा, चिलवेल मार देगा. यार रीस जेम्स को क्या हो रहा है यार? That's a big blow. Apparently सिर्फ एक महीने के लिए बाहर है सिर्फ. No, but it's constant hamstring injuries, man. The way he plays. ये तो चलता रहेगा. Unless he gets surgery, Chris भाई, it's gonna be a recurrent injury. वो सर्जरी नहीं करवा रहे काफी मेरे टाइम को से. 1-0 लग रहा है चेल्सी विन. मेरे को लग रहा है वो I think so. I went for 2-0. थोड़ा डर्टी विन होगा, बट वो dirty win. Oh यार, नहीं, dirty होएगा यार. Dirty club, dirty win. West Ham ने साइन किसको किया? I'm genuinely curious. Who have West Ham signed? they've signed a Julian dog. Alvarez. They have signed a Julian dog so that Alvarez. Kurt Zuma doesn't kick a cat. नहीं, Julian Alvarez, Ward Prowse. Ward Prowse sign किया उन्होंने. Paqueta might be off because I don't know if he's being allowed to play this game or not. नहीं, इतना जल्दी नहीं होगा. He's been investigated. आ गया भाई, आ गया. That's the thing. Investigated by Ivan Toney खेला ना till the end of the season. Yeah, Oh, this would be lovely, man. James Ward Prowse एक गोल करी छोड़ा. Free kick मारा, top corner च मजा आ सी रहा. ओए. Edson Alvarez ठीक है, लेकिन I think Edson Alvarez is a bit slow for this league. Let's see. Hope I'm wrong. I hope I'm wrong. Guys, there you go. We covered Chelsea as well. और दसो. और क्या चाहिए? First session of Brown Monday, we covered near enough so much topics, so much gupshup, so much mazak, so much mogul. We can only do this much for you, man. All we ask in return is a like. आप बटन की प्रेस वैसे ग्रेस भाई आपका टेस्ट नहीं हुआ ना अभी? एक जल्दी से उर्दू टेस्ट दोगे? 2 मिनट. 1 मिनट लगेगा. मैं जो बोलूंगा उर्दू में आपको बस बताना है what it means in English, ठीक है? माँ कसम. ये कहाँ Is this open for everyone or just Chris, bhai? Just Chris भाई. Well, very ironic and very. अच्छा listen, निधि तू WhatsApp चेक कर, मुझे जवाब देना है. Alright. बड़ा सिंपल है यार. एक है first word is तुम. What is तुम? You. कभी नहीं. कभी नहीं. Never. चलोगे.
मेरे को समझ आ गया कि क्या बोलने वाला है। अच्छा, I see where you're going. I see where you're going. यार मैं भी concentrate इतना कर रहा हूँ। ग्रिज आगे भाई बोल, इतना आगे पूछ बोल। रहे, मैं कह रहा हूँ ग्रिज भाई आगे बोल क्या है? मेरा चल सिर यार, दर्द। क्या है? चलोगे Walk अकेले? alone. क्या बात है, यस, क्या बात है। परफेक्ट Arsenal उर्दू fan यार। is चलो। Arsenal आंसू fan, आंसू आ गए दक्ष, आंसू आ गए। इतना 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 इमोशनल रोलर कोस्टर। यस, एग्जैक्टली। Okay, listen, guys, you've been wonderful. Of course, Daksh, Nidhi, Manas, we'll be back next week. We don't know whether Thursday or Friday. We haven't fixed a time. That's what Brown Munde do. We are very pay as you go. Nidhi bora tha. नहीं मैं तो बाय ऐसे ऐसे So we'll find out. ऐसे We'll fix a time, Thursday or Friday, depending on what is happening. But I guess as Sagar says, he says now it's time for chia.